Hello students, I shall continue my lecture significant figures. So students, all of you know about the significant figures. Significant figures are those figures on which we have full confidence, means in any observation, if larger the significant figures, then larger the accuracy. Means more, if you observe more significant figures, then you will achieve more accurate result. Okay. In significant figures, many rules are adopted. Correct? Non-zero values are significant. Correct? All zero between the non-zeros values means significant figure are also significant figures. Leading zero are not significant. Trailing zero are always significant figure. Correct? These are the simple rules. Okay students, and in significant figure, suppose 3.3 into 10 raised to power 8, 10 powers are not significant figures. Okay, or pure values, that is the value of pi 3.14 or the value of capital G 6.62 into 10 raised to power 11. Correct? These are the experimental values. So infinite significant figures. How many significant figures? Infinite. Very similarly, suppose 4300. How many significant figures? 2. It is very important because जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये बुक में डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी. Suppose if you measure a length 4300 meter, correct? If you don't use unit, then according to the rule here only 2 significant figures. But if you observe, you measures and you put here unit, so here how many significant figures? 4. So students, be careful in this case. If you put unit and you observed, you measured, correct? So here the significant figure is 4. Suppose if you write only 11,000, how many significant figures? Only 2. But if 11,000 kilometer, if you measure this length by using any apparatus, so it is clear all things you observe are not 100% accurate. एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर जो मैंने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कहा या बुक्स में मेंशन है इनफाइनाइट, क्यों? बिकॉज दीज वैल्यू गिव बाय द साइंटिस्ट. आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसलिए यहां कहा गया कि यही 100% एक्यूरेट है. तो 100% एक्यूरेट है, इट मींस इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हो वो 100% एक्यूरेट
नहीं हो सकता। That's why here if you observe, if you put unit, then somewhat difference here and there, correct? तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर तो 2 होगी सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहाँ पर आपने यूनिट रख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये ट्रेलिंग जीरो भी काउंट हो जाएंगे। ओके, वन मोर थिंग, व्हाट? इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सपोज 1.1 मीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2, correct? And you want to convert into kilometer, 1.1 upon 1000, correct? Also significant figure 2. So students, in conversion of unit, no change in significant figure. ये ध्यान रखिएगा कि अगर 1 मीटर है, मतलब कह लो 2.0 मीटर, 2.0 मीटर, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। अब इसको आप यहां किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किसी भी यूनिट में आप चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में एंड आई आल्सो टॉट इन मल्टीप्लिकेशन, आपको मालूम होगा कि इन मल्टीप्लिकेशन होल नंबर पे आप फोकस करते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन यू फोकस ऑन ओनली आफ्टर डेसिमल। करेक्ट? इन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर पार्ट 1 लेक्चर को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपने 2 बताया, लेकिन अगर आपने इसको यहाँ मीटर पुट कर दिया, यूनिट पुट कर दिया, तो ये ट्रेलिंग जीरोस भी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। Okay students, and in science one more thing, order of magnitude, correct? In observations the value of any physical quantity can be written as number is equal to m into 10 raised to power x, m into 10 raised to power x, means where x is integer, that is 1 to 100 and so on, and m lies between 1 to 10. In comparison of 10 की power, this difference is much lesser, correct? So you know, if the difference between 1 to 10 is not very closer to 10 raised to power x, then you use arithmetic mean. But if the difference between 1 to 10, the value of m varies
between 1 to 10, so difference is small. Here we use geometric mean of 110 means 3.16. याद रखिए, if difference is more, then you use to find the average value, you use arithmetic mean. Okay, if difference is very close each other, so to find the mean you use arithmetic mean. Arithmetic mean, suppose two values a and b, then the geometric mean is equal to under root ab. Here value of a is 1, value of b is 3.16. So m is always lesser than 3.16. Okay, we will take some illustration to clear how will you convert or how will you represent the values in the order of magnitude. Suppose 9 into 10 raised to power 7. 9 into 10 raised to power 7. First you see the value of 9 is greater than 3.16. Is greater than 3.16. So first you convert the 9 less than 1.6. Okay, concept is 9 upon 10 into 10 into 10 raised to power 7. Okay, so 9 upon 10 0.9 into 10 raised to power 8. तो इसको डायरेक्टली आप क्लास बताते हैं कि जब डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तो यहां पर जो है पावर ऐड हो जाएगी पॉइंट में, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इट इज वेरी इजी. करेक्ट. सेकंड इलस्ट्रेशन संभवतः 4.2 into 10 raised to power 10. Okay students, here also you will convert into the value less than 3.16. Again here we write 0.42 into 10 raised to power 11. Next example, suppose 3 into 10 raised to power 18. Here the value is less than 3.16, so you can't change. The concept is here that this value means this value. सबसे पहले इस वैल्यू को आपने देखा, अगर ये 3.16 से पहले से ही कम है तो no change in order of magnitude. If the given value is greater than 3.16, so you will convert the lesser by 3.16. तो इस तरीके से डेसिमल आप लगाएंगे. जैसे एक एग्जांपल और 2.1 into 10 raised to power 10, ये भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है. तो केवल ये देखना है आपको कि 3.16 से ज्यादा होगा तो उसे हम इस तरीके से कम कर लेंगे. ये है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. वेरी सिंपल थिंग. Okay, you also read the significant figures and error analysis, correct? तो ये छोटी सी बात थी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, और आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक बहुत मेन चीज मैंने आपको बताया. तो इस तरीके से ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये बात थी आपकी जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. एंड वन मोर थिंग, एरर एनालिसिस. सपोज यू हैव टू रेजिस्टेंस R1 100 plus minus 0.01
ohm, and R2 is equal to 300 plus minus 0.03 ohm. Correct? First part in series, second part in parallel. Okay students, in series and in parallel. So first part, you know, in series the formula of R equivalent is R1 plus R2. R equivalent is equal to R1 plus R2. So R equivalent R1 plus R2, the true value 100 plus 300. 100 plus 300 is equal to 400 ohm. This is the true value of equivalent resistance in series. Correct? And very clear, R equivalent means error in the equivalent resistance when connected in series. All of you know the error always added. Error always be added. Be added. Correct? Always be added. So 0.01 plus 0.03, 0.01 plus 0.03 is equal to 0.04. So representation of error क्या आएगा? 400 plus minus 0.4 ohm. This is the final answer when the resistance connected in series. Connected in series. Okay students? Second part पूछा जाता है, you know, in parallel R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Or you can say R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. Correct? R1 R2 100 into 300 upon 100 plus 300 is equal to 3, 1, 2, 3, 4 upon, correct? 400, 0, 0 cancels. Okay students? 4 7s are 28, 2. So the R equivalent is 75 ohm. Correct? This is the equivalent resistance. But if you measure, if you find the error in equivalent resistance, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, to be careful for this system. Correct? R equivalent, अच्छा, error in equivalent resistance के लिए एक concept differentiation करनी है. Okay, but you don't know at this time about the differentiation, so we use the simple concept. Okay, here R equivalent. Okay, delta R equivalent upon true value of R equivalent resistance. Here multiplication. Correct? So delta R1 upon R plus delta R2 upon R2. But here sum. Okay student? So we put RS. What? RS. Okay? So
delta RS upon RS. Okay, S for series. In series R1 plus R2 also we find here. Okay. So RS means true value of equivalent resistance R1 plus R2. Okay. Also RS. Then RS is equal to 100 plus 300. 100 plus 300 is equal to 400. And okay, ये क्या हो गया आपका error in resistance R1 plus R2. Error. So error will be added. 0.01 plus 0.03 is equal to 0.04 ohm. Okay, students. So you put delta R1 means 0.01 upon 100 plus 0.03 upon 300 plus delta RS. Delta RS means 0.04 upon RS 400. Okay, students. Here we know. So delta R equivalent upon R equivalent, correct? 0.01 upon 100 plus 0.03 upon, so 0.01 upon 100 means 0.0001 plus 1, 2, 3, 4 0.0001 and here 1, 2, 3, 4 plus 0.001, so 0.003, correct? R equivalent, error in R equivalent upon R equivalent, also we calculate here 75, so into 75. This is error in R equivalent. So you represent R equivalent plus minus delta R equivalent. R equivalent means 75 plus minus this value. 3 5s are 15, 3 7s are 21, 22, and here if you think about the significant figure, only two significant figure. Okay, 2, 2, 5. Here you use rule first 0.0225, 0.0225, correct? Only two significant figures, so we draw these figures and your final answer is 75 plus 0.02, करेक्ट? तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंट था निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. So student, note in your fair notebook because this step is something different from other questions. Okay. In composite functions, many questions you solve. Suppose Z is any physical quantity a cube b raised to power 4 upon c square. So if you want to know the fractional error, correct? You know about the concept delta z upon z.
is equal to 3 delta A upon A plus 4 delta B upon B and plus 2 delta C upon C. Suppose A percentage error in A 2%, percentage error in B 4% and percentage error in C is 3%. Correct, students? And you solve the fractional error in Z, or you calculate also the percentage error in Z. And one more question here: which quantity is most responsible for the error? One more question: which quantity is more responsible for the error? Here coefficient 3, here coefficient 4, here coefficient 2. In this term, the more coefficient is used. So the quantity B is more responsible for the error. Okay student, तो परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पर डेल्टा Z अपॉन Z into 100, 3 delta A upon A into 100 plus 4 delta B upon B into 100 plus 2 delta C upon C into 100. Put these values: 3 into 2%, 4 into 4% plus 2 into 3%. So 6%, 16% plus 6%. So 16, 6, 22 plus 6, 28%. Correct? This is the final answer. Okay student? इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड, if you observe any value or you put 20,000 kilometer, if you don't have unit, only significant figure 1, but if you put the unit, then here 3 to 5. Okay, so no change in significant figure when you convert any unit from one unit to another. Okay, और ये सबसे मेन था इस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि अगर आप वैल्यू कोई भी हो और यहाँ पर यूनिट पुट कर रहे हैं यानी आप मेजर कर रहे हैं तो यहाँ इनफाइनाइट नहीं होगा, ये प्योर वैल्यू नहीं देंगे और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ये आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज कंप्लीटेड एंड अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें. ओके स्टूडेंट्स.